कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे विशिष्ट अतिथि आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। परिचय कराना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल का। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल एसोसिएट डीन है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ फ्लोरिडा, जैक्सनविल, यूएसए में। आप प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं टीचिंग में, शोध कार्य में, रिसर्च में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्यों में। आपने पीएचडी की है डिसीजन एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से। आपने मास्टर्स की डिग्री ली है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, यूएसए से। आपने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, इंडिया से। आपका जो शोध कार्य रहा है, जो रिसर्च रही है, वो इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पे रही है। आपके 50 आर्टिकल्स अभी तक संसार के, वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और आपने 60 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको वेब ऑफ साइंस हाई इंपैक्ट रिसर्च अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपने इनोवेटर ऑफ एजुकेशन अवार्ड भी आपको मिला है और आप मूवर एंड शेकर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्लोरिडा से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपका स्वागत है एक बार पुनः प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल, आपने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों को पाया है। जानना चाहेंगे कि उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन, क्योंकि आपकी उपलब्धियों के बारे में तो काफी लोगों को पता है या पता होगा, लेकिन आपका बचपन या कुछ ऐसे संस्मरण जो लोगों को नहीं पता हैं। तो पहले तो आप बताइए कि आप कहां पैदा हुई, कहां आपका बचपन बीता, कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल, प्लीज। पहले तो थैंक यू मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। मैंने आपके बाकी एपिसोड्स देखे हैं इस कार्यक्रम के भी, और आपके जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और आपके चीफ गेस्ट्स काफ़ी वेल नोन हैं उनके प्रोफेशंस में। तो being one of them, it's an honor, so thank you for having me here. Mera bachpan, actually I'll start with where I was born because I'm very, very proud of my childhood. I was born in a hospital that was built by my grandfather and my grandmother, close to a house that they'd also built from scratch. So I feel like, I was born into my family in a place that defines my family and where my family is from. और मैं ऐसे एक परिवार से हूँ जिसके सदस्य ना सिर्फ अपने प्रोफेशंस में हाई अचीवर्स हैं, लेकिन जिन्होंने समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो शुरू से मेरा बचपन has always been looking at what my grandparents, what my parents have done, what my uncles and aunts have done in society. My memories, आपने पूछा मेरे memories क्या हैं, तो जब कोई लोग अपने grandparents के बारे में सोचते हैं, they think about sitting and having long conversations and gaining wisdom from their dada or dadi. मेरे memories बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरे memories were always, मेरे दादा और दादी were out doing something, making a difference in people's lives, building something. So those were my earliest childhood memories.
My early education was all over the place. So मेरे पिताजी Indian Administrative Service में ऑफिसर थे और मेरी माँ इंडियन पुलिस सर्विस में ऑफिसर थी और Papa was from North India, from Uttar Pradesh, and my mother's from Tamil Nadu, which explains my Hindi in some ways. But they, being from different states, they chose Maharashtra cadre for their service. And they were posted in many different places in Maharashtra. So from my first standard to my 10th standard, I changed about 8 different schools across multiple boards, across multiple cities, even across multiple countries. I spent a year and a half, 2 years in Australia when my parents were sponsored by the Indian government to do their MBA there. So my education was quite fragmented. But yeah, तो बचपन में जो आपकी एजुकेशन अलग अलग जगह हुई, तो इसमें आपको पे काफी प्रभाव आया होगा, क्योंकि नई नई जगह आप जाती थी, नए नए लोग मिलते थे। तो कुछ ऐसा कोई संस्मरण हो जो आपको याद आता हो, चाहे वो इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी आप पढ़ी हैं उस दौरान, तो उस वक्त आपका कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? So definitely बहुत प्रभाव पड़ा. There were some negatives. So I don't have, a lot of people have childhood friends जो, अपने elementary school से जानते हैं और families जानते हैं. मेरे ऐसे कोई friends नहीं हैं. I don't know anybody, from my elementary school or my middle school, right? They kept changing. और तब Facebook और email और ये सब चीजें नहीं थी. So there was no way of really, staying in touch or keeping in touch. But kuch positives bhi the. So not only me and my parents, but my whole family, we've always been very open to change, and being able to adapt to new situations was just a part of life. We never clung to the past. We always looked to make the best of where we were. When my parents were in Australia, they were graduate students in their 30s and 40s. And if you know about graduate school abroad, you don't have a lot of money or resources, So going from India, where we lived like kings, we were now living as a family of 4 on a graduate student salary. But we made the most of it. My father and my mother, they made sure that we ate well, we traveled everywhere. I remember my father buying a secondhand small Mazda, and we packed a tent in the back, and we just went backpacking and camping all over Australia. And now I'm comfortable going backpacking and camping, and also living in 5-star hotels. They're the same to me. I can eat street food. I can go to a Michelin star restaurant, right? So my upbringing taught me to be flexible, adaptable, enjoy whatever situation you're in, right? Comfort comes from yourself. Comfort doesn't come from surroundings. So changing all the time is not bad. तो आपका संस्मरण है, जो आपकी मेमोरीज हैं, वो बहुत अच्छी रही, और आपने कहा बारी से मिक्स्ड भी थी, लेकिन आपने इन सब के होते हुए भी जब आप उच्च शिक्षा में आई, जैसे 10th आपने बताया कि इस तरह रहा, उसके बाद आपने 12th या उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो आपकी कहाँ हुई? So when I was in my 10th, तब computers just आना शुरू हुए थे. So this was like early 90s, right? Early 90s. और तब कोई डिग्रीज नहीं थी कंप्यूटर्स में, पर there were a few companies like AppTech and NIIT, if you remember back in the day, that would offer classes in Microsoft Office or Adobe or things like that. So I would take these classes, and I got very interested in computers very early on. और तब ये कुछ भी नहीं था, Zoom वगैरह कुछ भी नहीं था, right? It was just the black and white interface of the internet, Windows 95 or MS-DOS, ये सब चीजें थी. तो मैंने अपने, well, my junior college was in Ruparel
in Bombay. And I took up electronics and telecommunications engineering in my junior college, and I enjoyed it, but it was too much on the hardware side of things. I was more interested in the logic and the programming. So I switched gears, और जैसे कि मैंने कहा degrees नहीं थी computers में तब, तो मेरा undergraduate BCom था सिडनैम में, पर मैंने within the BCom degree I did a minor in computers even in my undergraduate. जब मेरा undergraduate खत्म हुआ, तब university started offering degrees in computers, and University of Pune was one of the very well known places to learn about computers. They had one of the first supercomputers in India, the University of Pune. So I convinced my parents to let me move and do my graduate degree at the University of Pune in computer applications. So I was one of the first batch of students to get an MCA. Tab MCA just shuru hua tha. And I was one of the first batch to get an MCA from the University of Pune. After the University of Pune, I wanted to continue in computers because I was really interested in what I was doing. And I decided to pursue a PhD in computer science. And I moved to the University of Houston for that. So mera wahan jump hua from India to the US. And I went to the University of Houston, started a degree in computer science. But what I found more interesting was the application of computers to solve issues in companies and in organizations. So within my PhD, I switched gears and I moved from computer science to information systems. So like Mr. Goel said in the introduction, information systems at that time was a pretty new field, and my advisor was one of the first people in that field. So information system was born in the late 70s as a separate discipline. And it's really like Mr. Goel said, it's the intersection of computers, human behavior and organization. So that was my education trajectory. तो आपने जैसे बताया कि आपने कंप्यूटर में आप चले गए, आपके दोनों आपके पेरेंट्स एक आईएएस एक आईपीएस, तो आपने आईएएस और सिविल सर्विसेज में जाने का नहीं सोचा? हाँ सोचा, मतलब बिल्कुल सोचा. So my parents always gave me the freedom to choose to study and to do whatever I wanted, including the civil service. So I did think about it, but I really did enjoy what I was doing with computers a lot more. And my nature is that I'm I enjoy thinking, I enjoy mental challenges, and so being in academia, being in a research field just was a better route for me. तो इसलिए आपने रिसर्च और शोध को प्राथमिकता दी. तो आपने फिर भारत को छोड़ के विदेश में जाने का, आगे पढ़ाई करने का जो आपने सोच बनाई थी, उसका कारण क्या था? ये था कि इंडिया में उस वक्त कंप्यूटर बहुत ज्यादा प्रारंभिक स्टेज में था, या कुछ और आपने सोचा हुआ था? मेनली वो, मतलब कंप्यूटर्स जस्ट शुरू हुए थे और डिग्रियां जस्ट शुरू हुई थी, और मास्टर्स के बाद ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, और मेरा तब फील्ड काफी थियोरेटिकल था. सो आई वाज डूइंग compiler optimization, which is very theoretical. It's a lot of mathematics and programming and logic. और उस type का field ज़्यादा कुछ इंडिया में नहीं था तब. So that was one of the first reasons that I decided to move to the US. Okay. तो आपने जब वहां पहुंच गए तो आपने वहां पे जाके एक मास्टर्स कोर्स किया, और उसके बाद आपने वहीं पे पीएचडी ली. तो पीएचडी के बाद क्या आपने तभी सोच लिया था, मन बना लिया था कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगी, या आपका कुछ और विचार था? फ्रैंकली मेरा कभी ऐसा कोई ग्रैंड प्लान नहीं था कि मुझे टीचर बनना है या रिसर्चर बनना है. आई हैव ऑलवेज बीन मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस. नेक्स्ट चैलेंज क्या है. मेरी टीचिंग भी काफी डिफरेंट है. आई डोंट टीच लाइक usual teachers do. So you mentioned that I got an award in innovation in education. So one example of a class that I teach is social media and business analytics.
ये ग्रेजुएट लेवल क्लास है और मेरे स्टूडेंट्स टीम्स में लोकल बिजनेसेस के साथ काम करते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए और बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस का रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल देखते हैं और उनके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपका सोशल मीडिया में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसमें आप कैसे वो स्ट्रैटेजी को मॉनिटर कर सकते हैं और फिर चेंज कर सकते हैं. Or it's a very novel approach to teaching. So my role is less of the sage on the stage. I'm not standing on a stage giving my wisdom to people. I'm actually with my students as a coach and a mentor, helping them solve a problem so that we can all learn while doing what we're doing. So my goal was not to become a teacher, but my goal was still, to do things that made a difference, to solve problems, to tackle challenges. So I approach teaching also like that. It's just a way to find interesting problems and solve them. तो आप जो इस तरह का ये आपने स्ट्रेटजी बताई कि इस तरह आप वहां पर हेल्प करते हैं लोकल बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को, तो ये कार्य तो जनरली जो देखा गया है इंडिया में और बाकी जगह भी कि कंसल्टेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं. तो क्या वहां पे यूनिवर्सिटी या आपका जो रोल है एज ए कंसल्टेंट ज्यादा है और टीचर के या रिसर्चर के अलावा? हाँ बिल्कुल, and you're absolutely right. This role of helping businesses is usually done by consultants. I also have a consulting firm, but मेरी thinking ये है, मेरी philosophy ये है कि the role of academia and the role of education is to help organizations, is to help people, is to help growth in the society. The role of a university is not to give degrees. Degree is just a means to an end, right? Consultants always come with a bias, right? जब आप consultant firm hire करते हैं, उनका bias is to make a profit, right? They have their own, set of tools that they use. But as a professor, I am exposed to so much research in that area. Like if we look at strategy, there's so many different models of strategy, whereas a consultant will only talk about one model, which is that consulting firm's model, right? So I really think universities and academia can bring in so much more depth and breadth to helping businesses. So जब मैं companies से बात करती हूँ, not just local businesses, but also big companies, especially in my role in executive programs, we work with executives and we say, आप consultant को hire कर सकते हैं या आप university से hear कर सकते हैं कि how can you do things better? How can you do things differently? And then you make up your own mind on what's the best for your company. So yes, we are like consultants, but we provide, a more research balanced approach to solving problems. तो अब आपने अपनी, हालांकि ज्यादा आपका अभी जिंदगी का समय नहीं बीता है, लेकिन आपने इस छोटे से टाइम में बहुत कुछ देखा शिक्षा के बारे में. आपने क्योंकि इतने स्कूलों में शिक्षा ली अलग अलग जगह जाके, और उसके बाद आपने एमसीए भी किया और आप बाहर भी पढ़ी, और आज आप यूनिवर्सिटी से मैं प्रोफेसर हैं. तो आज आपको क्या लगता है कि क्या अंतर आ रहा है भारतीय शिक्षा पद्धति में और वहां की शिक्षा पद्धति में? क्या एक ऐसा डिफरेंस है कि जो आज भी भारत के स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के लिए, बाहर जाने के लिए एक अट्रैक्शन रहता है, जो भारतीय स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बाहर जाना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है? So I think Indian education is very strong up until almost junior college. I really think that the Indian education system is really strong, and some of it comes from the remnants of the British Empire, but also beyond that. I think that we have some very good schools. We have some very good boards and content areas. The problem is higher education, because what next? And there isn't a whole lot of room for thinkers in India. You have to start being competitive and being, making money at a very early age to compete in society in India. But if you really are a thinker, if you want to explore different options,
there's not many avenues, and higher education is something that in India we can work on. So even the IITs, and I've been a visiting professor at IIM Bangalore. Yeah, I've been to IIM Indore, so I've seen some of the premier institutions in India, and they, even the PhD programs there, they're not really catered to thinking and research. They're more catered to giving people PhD so they can become teachers in other institutions. So that's part of the problem, I think, in India. The professional schools are great. We have some great medical schools. We have some great law schools. But beyond those traditional professions, higher education needs a revamp in India. अभी हमारे यहाँ पिछले जुलाई में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुई है, जिसमें कि काफी चीजें नई लाई जा रही हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पहले से मौजूद है. आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के जो चेंजेस आएंगे, रेडिकल चेंजेस, इससे भारतीय शिक्षा को काफी एक पुश मिलेगा और हमारा स्तर काफी ऊंचा जाएगा? Absolutely. I think that, it's been a long time coming. We haven't really changed our system for many years. So these changes are good, and the philosophy behind these changes are also very good. That shows a change in society where, we're accepting to more types of professions and more ways of doing things beyond your traditional path. So yeah, I think that it's a good change. तो इससे जब इतना ये चेंज आएगा, तो आप क्या सोचते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर उठेगा? लेकिन एक ही जो अड़चन आ रही है, जो लोग मानते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप वहां पढ़ाती भी हैं, या आपने जिस तरह का, और उसमें काफी लोग बड़ी उम्र के भी जुड़ते हैं आपके यहाँ मल्टीपल एंट्री के दौरान. आपको लगता है कि इंडिया में भी जो 40-50 के अबव हैं, वो भी दोबारा एजुकेशन लेना चाहेंगे, और उससे एक समाज में पूरे एक नई चेतना आएगी, और पूरे समाज में परिवर्तन आ जाएगा, सोसाइटी में डिफरेंस आएगा? So two things. एक तो education does not always have to be at a university, right? Education is everything. Education is learning how Zoom works, right? Education is learning how to build something new. So education always happens, whether it's at a university or not. Second is human beings are learners throughout their lives. Even a 90-year-old person is constantly learning something. Whether you realize that you're learning or not is a different story, right? So there doesn't have to be a formal, way of going about education. Education happens and learning happens regardless, right? I mean, you've mentioned that I'm young, and I am, but even at my age, I am in my 40s, and even in my 40s, I don't limit myself to things that 40-year-olds do, right? So this year I started learning how to roller skate, for example, right? India, where you typically see like kids do that, but I don't think that's a problem, right? But over the years, like I said, I've been a constant learner, and I've always been learning things. When I was in my 9th standard, I joined a course on amateur radio, and everyone else in the class was in their 20s. I was the only person that was, in the 9th standard, and I learned Morse code and how to transmit, signals on the radio waves. And I didn't think that was a problem. I also joined a course on an entrance exam, the MBA entrance exam. There was somebody visiting our family who wanted to get into an MBA, and they joined a course. And I was in my 10th standard, so I still had about 6 or 7 years to go to learn to get into an MBA. But I said, why not? I'll go to the classes with you. I went to every single class for 3 months, and I aced all the mock tests, right? So age is you can never be too young, and you can never be too old. Education happens, and learning happens. How much you are open to it can make a big difference in how you enjoy what you're learning. तो अभी कोविड के टाइम में जो यूएस से भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा,
हालांकि अब काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। तो वहां पे इस कोविड ड्यूरेशन में लास्ट ईयर या इस साल में भी क्या एजुकेशन का क्या पोजीशन रही? क्या वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में वर्क हुआ या नहीं हुआ? जैसे इंडिया में तो ज्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहे, जो खुले थे थोड़े टाइम के लिए, फिर वो दोबारा सेकेंड वेव में बंद हुए, और अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड के कैंसिल कर दिए गए, जो पहले 10th के भी हुए थे। क्या ऐसा कुछ वहां भी हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है. So we had to move to online education, right? Even though we were not prepared, or we were not an online university. But learning again did not stop, right? So even though the physical doors closed or the physical campuses closed, there was a spike in online education, and we created. There were all these different platforms like Coursera and the massively online course platforms that opened up. So people were still taking courses. People were still learning new things. So this will continue, and traditional universities will have to find a good balance between whether to do it in a physical format or a virtual format. Some things actually work better in a virtual format, so they might continue even after COVID, even after things settle down. Some things might continue virtually. तो इस उस दौरान में जो एग्जामिनेशंस हुए वो वर्चुअली हुए आपके यहाँ? या सब तो virtually. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई? Problems to hai, cheating is number one. If you take the word teach and you reverse it, it's cheat. To jahan teaching hai, wahan cheating hai, right? Or physical way mein bhi hota hai, or virtual way mein bhi hota hai, or virtually it's easier. But ultimately, especially in higher education, you can cheat and you can get an A. You can cheat and you can get your first job. But if you want to be successful, you have to really know your stuff, right? So yeah. अब आपका आगे का क्या विचार है, क्योंकि अब आप अभी एसोसिएट डीन इस कम उम्र में बन चुकी हैं, तो क्या आगे भी अभी आप एजुकेशन में ही आगे बढ़ना चाहेंगे या कुछ और आपने सोचा है? I like what I do, but मेरा ऐसा कुछ plan नहीं है. I want to continue to solve problems. I want to continue to make a difference in society, in organizations, in businesses, and in people's lives, and whatever that whichever route that takes me, I'm open to it. Whether it's continuing in the same place or changing it, I'm open to it. चलते चलते आप क्या एक संदेश या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? हालांकि आप खुद भी यूथ हैं, लेकिन फिर भी यूथ के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? My main message would be to always be open to new things, be open to new ideas. Don't get too comfortable. One of the things that we learn a lot is to set goals, right? Have a goal in your life. The problem is, like in my case, if you achieve your goal early, then what, right? So don't limit yourself. Always be open to new things. Always be open to new ideas, new opportunities. And be a learner, be curious, continue learning. Okay, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल आपका कि आप हमारे संग जुड़ी और आपने इतनी अच्छी अपने बारे में सब बातें बताई। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों को आज का आपका कार्यक्रम जो आपने बातें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और एक तरह से उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम जो कि सीधा प्रसारित किया गया V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोका न्यूज द्वारा, एवं इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी सीधा प्रसारित किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू bring to you every day new topic in the media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. in the morning. And tomorrow, media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. The topic is politicians versus bureaucrats. And our panelists are Dr. C.V. Anand Bose, IAS, one-man expert commission on labor, Government of India. Captain Ganesh Karnik, former MLC and Chief Whip, Karnataka Legislative Council, Chief State Spokesperson of BJP, Mangaluru, and Mr. M. Harisena Verma, IPS, former Special Director, Ministry of Home Affairs, Government of India. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी गोयल आपका कि आप हमारे संग जुड़ी और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। आपको बहुत साधुवाद। आप अपना इसी तरह आगे बढ़ें
और काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका